आज की इस वीडियो में हम देखेंगे प्लास्टिड से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सो कीप वाचिंग दिस वीडियो टिल एंड फॉर बेटर प्रिपरेशन। Question number 1. Cell organelles found only in plants is Golgi complex, mitochondria, plastid, ribosome. Correct answer is option C. Plastid वो organelles हैं जो कि सिर्फ plants के अंदर present होते हैं। Question number 2. Green pigment chlorophyll present in plants in which part? Chromoplast, chloroplast, ribosomes, lysosome. Correct answer is option B. क्लोरोप्लास्ट जो है वो पार्ट है प्लास्टिड का जिसके अंदर ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 3. द ब्राइट कलर्स ऑफ राइप फ्रूट्स आर ड्यू टू। यस, क्वेश्चन को पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ प्लास्टिड डज नॉट कंटेन स्टोर्ड फूड मटेरियल। ऑप्शन ए ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। क्रोमोप्लास्ट जो है वो पार्ट हैं प्लास्टिड के या वो टाइप हैं प्लास्टिड की जिसके अंदर जो है स्टोर्ड फूड मौजूद नहीं होती, और इसी तरह जो राइप फ्रूट्स हैं पके हुए फलों का जो कलर है वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 4. Plant cell differ from animal cell because of presence of cell wall and absence of chlorophyll in the plant cell. This option is not true. Option B. Presence of cell wall and chlorophyll in plant cell. This is also not true. Option C. Absence of cell wall and presence of chloroplast in animal cell. Option D. Absence of cell wall and presence of chlorophyll in the plant cell. So correct answer is option B. Presence of cell wall and chlorophyll in plant cells differentiates the plant from the animal cell. Question number 5. In which plastid are not found blue-green algae, bacteria, fungi, all of the above? So correct answer is option D. इन तीनों के अंदर ब्लू ग्रीन एल्गी में, बैक्टीरिया में और फंजाई में प्लास्टिड प्रेजेंट नहीं होते। Question number 6. Which of the following organelle is bonded by two unit membranes? Golgi complex, peroxisomes, chloroplast, lysosome. Correct answer is option C. क्लोरोप्लास्ट वो ऑर्गेनेली है जो कि दो मेम्ब्रेन से मिलकर बना होता है। क्वेश्चन नंबर 7. What is the common between chloroplast, chromoplast and leucoplast? Presence of pigments, or possession of thylakoids and grana, or storage of starch, protein and lipids, or the ability to multiply by fission-like process? So correct answer is option D. क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट के अंदर मल्टीप्लाई होने की एबिलिटी है बाय अ प्रोसेस लाइक फिशन। Question number 8. Which one of the following cellular part is correctly described? Option A. Thylakoid flattened membranous sacs forming the grana of chloroplast. तो यही ऑप्शन करेक्ट है कि थैलेकाइड बेसिकली फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स हैं जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद ग्रेना को बनाती हैं। क्वेश्चन नंबर 9. Thylakoids are the constituents of chloroplast, mitochondria, endoplasmic reticulum, ribosome. So correct answer is option A. Thylakoids are present in chloroplast. Question number 10. In higher plants, the shape of the chloroplast is discoid or cup-shaped, girdle-shaped or reticulate shape. So correct answer is option A. Discoid shaped chloroplasts are present in higher plants. Question number 11. From the following, select the statement that is true. All cells have a cell wall. Option B. Animal cells contain microtubule but plant cells do not contain microtubule. Option C. The Golgi apparatus is found only in animal cell.
Option D, chloroplasts are found in plant cells but not in prokaryotic or animal cells. So correct answer is option D, क्लोरोप्लास्ट जो है वो सिर्फ प्लांट सेल्स के अंदर होती हैं और प्रोकैरियोटिक और एनिमल सेल्स में एब्सेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द क्लोरोप्लास्ट ऑफ एल्गी यूजुअली लेक ग्रेना, pigment, quantasomes और लेमिली। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ग्रेना जो है वो एल्गी के क्लोरोप्लास्ट के अंदर यूजुअली एब्सेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, एल्यूरोप्लास्ट इन अ सेल स्टोर स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, एल्यूरोप्लास्ट जो है वो प्लास्टिड की वो टाइप हैं जो कि प्रोटीन को स्टोर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, plant cell differ from the animal cells in having centrosome, Golgi body, vacuole, plastid। So correct answer is option D, प्लास्टिड जो है वो एक प्लांट सेल को डिफ्रेंशिएट करता है एनिमल सेल से, क्योंकि प्लास्टिड सिर्फ प्लांट सेल्स में होते हैं और एनिमल सेल्स में एब्सेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया contain an inner and outer membrane. Option B, both chloroplast and mitochondria have internal compartment and thalakite space bounded by the thalakite membrane. Option C, both chloroplast and mitochondria contain DNA. Option D, chloroplasts are generally much larger than mitochondria. So correct answer is option B, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों के अंदर इंटरनल कंपार्टमेंट्स होते हैं, लेकिन थैलेकाइट स्पेस सिर्फ क्लोरोप्लास्ट में होती है और माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होती। Question number 16, in chloroplast, chlorophyll is present in the thalakkites, in the stroma, in outer membrane or in inner membrane. So correct answer is option A, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो क्लोरोफिल है वो थैलेकाइट सेक्स के अंदर प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 17, द टर्म क्रोमेटोफोर वाज कॉइन्ड बाय स्कीमिट्स, कंपेरेथी, W. Pfeiffer, Singer and Nicholson। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, स्कीमेटिस जो है वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्रोमेटोफोर की टर्म सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाई। क्वेश्चन नंबर 18, क्वांटासोम्स आर फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, क्वांटोसोम्स आर फाउंड इन chloroplast. Question number 19, the main difference between chlorophyll A and B is chlorophyll A is linear chain compound while chlorophyll B is branch chain, or chlorophyll A has no magnesium ion in the center of molecule. Option C, in chlorophyll A there is CH3 group while in B it is CHO group. So correct answer is option C, कि क्लोरोफिल ए के अंदर जो है वो CH3 ग्रुप प्रेजेंट होता है और क्लोरोफिल बी में जो है वो CHO यानी अल्डिहाइड ग्रुप मौजूद होता है। क्वेश्चन नंबर 20, इन लैंड प्लांट्स द गार्ड सेल्स डिफर फ्रॉम द अदर एपिडर्मल सेल्स इन हैविंग क्लोरोप्लास्ट, साइटोस्केलेटन, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, क्लोरोप्लास्ट के लैंड प्लांट्स के अंदर जो गार्ड सेल्स होते हैं वो दूसरे एपिडर्मल सेल्स से डिफरेंट क्यों होते हैं? क्योंकि गार्ड सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। स्ट्रोमा इज द ग्राउंड मटेरियल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, क्लोरोप्लास्ट contain ground material or fluid filled material that is known as stroma. Question number 25, amyloplast look like proplastid, ilioplast, illuroplast, chloroplast। So correct answer is option A, amyloplast जो कि कार्बोहाइड्रेट्स को या स्टार्च को स्टोर करते हैं वो प्रोप्लास्टिड लाइक शक्ल में नज़र आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, which of these is mismatch? Amyloplasts store protein granule. Option B, elioplasts store oil or fats. Option C, chloroplasts contain chlorophyll pigments. Option D, chromoplasts contain colored pigment other than chlorophyll. Option D, leucoplasts contain colorless pigments. So correct answer is option A,
जो अमाइलोप्लास्ट है उसका बेसिकली काम जो है स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर करना है, और यहाँ पे प्रोटीन दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए जो है वो मिसमैच है। क्वेश्चन 27, रेड कलर ऑफ टोमेटो इज ड्यू टू बीटा कैरोटीन, एंथोसायानिन, लाइकोपीन, एंथ्रोसायानिन। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, टमाटो के रेड कलर की वजह क्या है, लाइकोपीन की प्रेजेंस है। क्वेश्चन नंबर 28, when green tomatoes fruits turn to red, then chloroplasts are disintegrated and get converted into chromoplast. Option B, new chromoplasts are formed. Option C, chromoplasts are changed to chloroplast. Option D, none of these. So correct answer is option A. Chloroplasts are disintegrated and converted into chromoplast when green tomatoes fruits turn to red. So correct answer is option A. Question number 29. Extranuclear DNA in the cytoplasm is found inside chloroplast and mitochondria or ribosomes, endoplasmic reticulum, Golgi apparatus. So correct answer is option A. Chloroplast and mitochondria are the organelles in the cytoplasm which contain extranuclear DNA. Question number 30. All plastids have essentially same structure because they have to perform same function, or they are localized in aerial parts of plants. Option C, all plastids store starch, lipid and protein. Option D, one type of plastid can be differentiated into another type of plastid depending on the cell requirement. So correct answer is option D, कि जितने भी प्लास्टिड होते हैं उनकी सेम स्ट्रक्चर होती है, इसलिए कि वो एक सेल से दूसरे सेल्स में डिफरेंशिएट हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है इन्वायरमेंट में और सेल की रिक्वायरमेंट पर। क्वेश्चन नंबर 31, क्रोमोप्लास्ट मे बी ऑफ ऑरेंज कलर, रेड कलर, येलो कलर, ऑल ऑफ द अबव। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, क्रोमोप्लास्ट ऑरेंज, रेड और येलो तीनों कलर के हो सकते हैं। Question number 32. The thalakid in chloroplast are arranged as interconnected disc, interconnected sacs, or stacked disc, none of the above. So correct answer is option C. थैलेकाइड्स जो हैं वो स्टैक डिस्क की शक्ल में क्लोरोप्लास्ट के अंदर अरेंज की जाती हैं। Question number 33. Many cells function properly and divide mitotically even though they do not have plasma membrane, cytoskeleton, mitochondria, plastids. So correct answer is option D, कि बहुत सारे सेल्स जो है वो प्रॉपरली डिवाइड होते हैं माइटोटिक प्रोसेस के थ्रू, हालांकि उनके अंदर प्लास्टिड जो है वो मौजूद नहीं होते।